ये पूरी तरह से XML बेस्ड कंपोनेंट्स के लिए था, ठीक है. नाउ व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू डू, वी हैव टू मूव फर्दर विद दिस पार्ट्स. हम लोगों को इसके आगे अपना काम करना होगा. तो ओम प्रकाश जी, सुशांत, मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था, क्या हुआ उसका? हम्म. अच्छा, ओम प्रकाश जी आपका? मैंने तो नहीं किया, बैठा था करने के लिए, या नहीं अभी कर ही रहा. ठीक है, इसको आप बना लीजिएगा. ओके, सो लेट मी गिव यू एन आइडिया. Vamsi. So, what exactly we are talking about, and what exactly we are going with it. So, during the application development, during the application development, generally we have two different things. One is UI part, and one is controller file. Okay. Here, the user interface or the UI part can be handled by two different things. One is XML, and the controller file can we go with two different parts. That's one comes with Java, while other one comes with Kotlin. Is it clear, Vamsi? Is it clear? Okay, so here what exactly we have to understand. Either we can go with XML with Java, okay, or we can go with XML with Kotlin, like this. Okay, we have choice that in which framework or in which part we are going to build some kind of application. Either we can use XML to build user interface with controller Kotlin, or you can build XML file using Java. Similarly, there is another component that's called Jetpack Compose. Okay, here the user interface component and the controller component both are working simultaneously with the UI framework development into Jetpack Compose as well as the controlling into Kotlin. Is it clear, Vamsi? Okay. Uh, राजेश जी, सुशांत, ओम प्रकाश जी, इसको भी आप समझ लीजिए. अभी तक मैंने आपके सामने ये चीज़ नहीं बताई थी. आपके पास में XML, जावा, कॉटलिन, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता चुका था, बट जेटपैक कंपोज के बारे में शायद मैंने आप लोगों को अभी तक नहीं बताया था, है ना? सो जेटपैक कंपोज क्या है? जेटपैक कंपोज एक फ्रेमवर्क है. जेटपैक कंपोज इज अ फ्रेमवर्क. Jetpack Compose is a framework. So the first question is, what is framework? Okay, let me put it into another part. So मैंने यहाँ पे बताया कि Jetpack Compose जो है ये एक फ्रेमवर्क होता है. Now the question arises, what is framework? सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, फ्रेमवर्क क्या होता है. उसके बाद में हम लोग Jetpack Compose के बारे में समझेंगे, ठीक है? सो ओम प्रकाश जी, फ्रेमवर्क क्या होता है? इन्वॉल्व प्रोवाइड करता है कि जो एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं उसको इन्वॉल्व प्रोवाइड करता है. ठीक है. सुशांत, फ्रेमवर्क क्या होता है? अच्छा, राजेश जी, फ्रेमवर्क? राजेश जी, फ्रेमवर्क क्या होता है? ठीक है. वामसी, व्हाट इज फ्रेमवर्क? फ्रेमवर्क प्रोवाइड द लाइब्रेरी If framework is a part of library, then what is library?
they both are different things. Okay, framework is different and library is different. Okay, so what exactly framework is? Let me introduce this part, that what exactly framework is. So framework are design components or designed structures, already pre-built, या हम कह सकते हैं, और we can say pre-developed designed structures which we can use to develop some kind of applications. Okay, फ्रेमवर्क क्या होता है? हमारे पास पहले से डेवलप्ड हुआ एक एक कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ डिजाइन स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है ना? कलेक्शन ऑफ, लेट मी गो विद कलेक्शन ऑफ डिजाइन स्ट्रक्चर्स होता है. इसका फायदा या इसका काम क्या रहता है? व्हाट एग्जैक्टली, व्हाई एग्जैक्टली वी आर यूजिंग इट? बिकॉज टू, फॉर एग्जांपल, let's suppose into an application I am providing a block here. Let's suppose I am putting a block here, or I am putting a button here like this. Okay, while putting a button, there's a part that, into the technical part, we have to code this button all of a sudden. We have to separately code the whole lines of the to implement this button into our code. अगर हमें ये बटन अपनी स्क्रीन में लगाना है तो हमें हार्डकोर पूरी की पूरी कोडिंग करनी पड़ेगी ताकि हम इस बटन को अपने सिस्टम में इंप्लीमेंट कर सकें. यस सुशांत जी, सुशांत ये चीज देखी थी आपने? ओम प्रकाश जी ये चीज देखी थी कि हमने क्या हार्डकोर कोडिंग करी थी? आप सोचो, हमने तो सिर्फ बटन लिख दिया था ना, बटन आ गया था हमारे पास में, ऐसा ही हुआ था ना. तो हमने हार्डकोर कोडिंग तो करी नहीं है. क्यों नहीं करी हार्डकोर कोडिंग? क्योंकि हम फ्रेमवर्क के साथ में काम कर रहे हैं इस वजह से. ठीक है, सो वामसी, व्हाट एग्जैक्टली इट इज दैट if we don't want to go with such kind of codings or such hardcore codings to develop a small components, then we will go with framework, because framework contains all these components within it. They are pre-built and pre-designed by the developers of them, so that we don't have to write the whole code, and instead of it, a single line of code can target or do the same thing what these lines will do. Vamsi, is that clear to you? Yes, sir. Okay, ओम प्रकाश जी क्लियर हुआ? सुशांत क्लियर हुआ? ठीक है. ओके, हाउ मेनी फ्रेमवर्क्स वी हैव राइट नाउ? हमारे पास एंड्रॉइड के अंदर, आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि एंड्रॉइड के अंदर हम कौन कौन से फ्रेमवर्क्स देख रहे हैं इस समय. ठीक है, वी मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट दैट हाउ मेनी फ्रेमवर्क्स वी हैव करेंटली इनटू एंड्रॉइड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट. So yeah, one more thing is library. I forget to introduce these libraries. एक और चीज़ है यहाँ पे, फ्रेमवर्क तो समझ में आएगी आप लोगों को? फ्रेमवर्क में कोई डाउट है? ओम प्रकाश जी, सुशांत, फ्रेमवर्क में कोई डाउट है? समझ में आ गया? वामसी, हैव यू एनी डाउट इनटू फ्रेमवर्क? Okay, now we have to understand these libraries part, that what exactly libraries are. So we design the whole structure with the help of whom? With the help of framework. Now I need to add some functionalities into this application. Okay, मैंने फ्रेमवर्क की मदद से एप्लीकेशन तो डेवलप कर ली, कोई दिक्कत नहीं है, पर अब मुझे क्या चाहिए? मुझे इसके अंदर फंक्शनैलिटीज को ऐड ऑन करना है. ठीक है, टू ऐड दीज फंक्शनैलिटीज, जब भी हम लोग किसी तरह की फंक्शनैलिटी के बारे में बात कर रहे होते हैं, whenever we are going to understand, or whenever we are going to implement some kind of additional functionality within our app, for that thing we will go with library. Okay, जब भी हम लोगों को एडिशनल फंक्शनैलिटी की आवश्यकता पड़ती है, हम क्या करते हैं? लाइब्रेरी का यूज करते हैं. वामसी, इज इट क्लियर दैट व्हाई वी आर यूजिंग लाइब्रेरी? हाँ, उसके अंदर देखिए क्या होता है, जैसे जो भी कंपोनेंट्स हम लोग देते हैं ना, वो कंपोनेंट्स पहले से स्ट्रक्चर्ड रहते हैं, स्ट्रक्चर्ड वे में फिक्स रहते हैं. वो बटन का कोडिंग किया हुआ है उसके अंदर, और आप उसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं.
उसके पूरे स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते, पर उसके अंदर छोटे मोटे आप चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कलर चेंज कर सकते हैं, उसके अंदर टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर रहता है उसके ऊपर। कहने का मतलब ये है, डिजाइन वो करके देते हैं, प्रॉपर्टीज आपको डिफाइन करनी होती है। ये अंतर होता है फ्रेमवर्क के अंदर, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने लीगो देखा है, हैव यू वामसी, हैव यू सीन लीगो एवर? लीगो इज अ गेम, या लीगो इज अ गेम। सो हैव यू एवर प्लेड लीगो? ओके, सो आप लोग एक बार देखिएगा इसको, मैं यहाँ पे आपको लीगो गेम दिखाता हूँ एक बार। हाँ, लीगो ब्लॉक्स जैसा होता है। देखिए, लीगो ब्लॉक डालता हूँ मैं एक मिनट। देखिए, ये लीगो ब्लॉक होता है। ये जानते हैं आप ओम प्रकाश जी, इसको देखा होगा आपने कई बार, है ना? सुशांत, वामसी, हैव यू रिकॉग्नाइज दिस? Okay, so why I am giving an example of Lego? Because Lego acts as framework. We don't have to create these blocks. We just have to adjust them with each other. हमें बस इन सबको आपस में जोड़ना है और हमारा एक कुछ भी एक कोई भी स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, है ना? We just have to attach them with each other and our structure will ready. So this is a framework. Okay, Vamsi, is it clear? सुशांत, ओम प्रकाश जी, क्लियर हुए? ठीक है। नाउ एट द सेम पार्ट द लाइब्रेरी works with functionality, that if we need some kind of functionality or additional functionality into our application, we always go with some libraries. Okay, any question? Vamsi, any question? Sushant? Can you please pardon? Okay, sure. So how many frameworks we have into mobile application development? The first framework is Flutter. Okay. Second framework will be, you can go with React Native. It also comes with a framework part. Third one is Jetpack Compose. So into this Android development series, we will going to learn this Jetpack Compose part along with our application building things. Okay. Now let's go with the further things. Let's go with these things, that what exactly they are. So at front हम लोगों ने ये चीज समझ ली थी कि इसके ऊपर हम लोग कैसे काम कर रहे थे. So Vamsi, you have to understand this thing. First of all, you have to understand this thing, then only you have to move on the Jetpack Compose. What exactly we have? Whenever we have, if you look on this part, you will find it out that for each activity, this is called activity. Okay, this is called an activity. सुशांत, बेटा एक्टिविटी क्या होता है? ओम प्रकाश जी, एक्टिविटी क्या होता है? नहीं, क्वेश्चन यही है कि क्या होता है, क्या चीज है एक्टिविटी. ठीक है. ओके, सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस. एक्टिविटी क्या होती है हमारे पास में? Vamsi, first of all, you have to understand this thing, that what exactly activity is. Okay, then only you have to move on. So activity is that जब भी हम लोगों के पास में सबसे पहली चीज तो ये है कि एक्टिविटी एक वो स्क्रीन हमारे पास में होती है, वो मेन स्क्रीन हमारे पास में होती है जिसके ऊपर हम लोग यूजर इंटरफेस एज वेल एज कॉटलिन के थ्रू कंट्रोलिंग ये दोनों करते हैं, वो हमारे पास जनरली एक्टिविटी कहलाती है. कोई भी ऐसी स्क्रीन जिसके अंदर हमारे पास में यूजर इंटरफेस और कॉटलिन की फाइल दोनों अवेलेबल हो, दैट्स कॉल्ड एन एक्टिविटी. सो व्हाट एग्जैक्टली एक्टिविटी इज? एक्टिविटी कैन बी अ स्क्रीन. Activity is a screen into Android development series which contains a user interface as well as a Kotlin part.
Okay, this is called an activity. Now the second part is this is what, this is the activity. Now activity into the baseline series, if you'll see the architecture, if you'll see the Android architecture, the activity is the base part. The activity is the base part which contains all the components within it. ओके, एक्टिविटी क्या होती है, ये शायद मैंने आप लोगों को अभी तक नहीं बताया था एक्टिविटी के बारे में. एक्टिविटी हमारे पास में बेस पार्ट होता है, एक ऐसा बेस होता है जिसके अंदर सारी चीजें आ सकती है. ठीक है, कहने का मतलब क्या है, हमारे पास होने को फ्रेगमेंट्स भी होते हैं, हमारे पास और भी दूसरे कंपोनेंट्स होते हैं, पर वो सारे के सारे कंपोनेंट कहां रन करते हैं, वो सारे के सारे कंपोनेंट रन करते हैं एक्टिविटी के ऊपर ही. ठीक है, तो एक्टिविटी क्या होता है, एक्टिविटी हमारे पास एक बेस पार्ट होता है, हर बार एक बेस होता है हमारे पास जिसके ऊपर सारी चीजें रन कर सकती हैं. So Vamsi, what exactly activity is? Activity is a base. Activity is a platform, or you can say activity provides you a platform on which you can run all over the things whatever we have into Android Studio. Okay, so these two things, yeah, all the components. For example, the screen, we also have some kind of screen components known as fragments. Okay, these fragments can also work with activity. We cannot run activity over a fragment, while we have to create an activity to run fragments. Okay, ओम प्रकाश जी क्लियर हुआ, ये सुशांत क्लियर हुआ, सुशांत, या वामसी, इज इट क्लियर? For example, language Yeah, you can go with some kind of things, you can go with those parts. Okay, so what exactly we are created here, if you'll see this, if you'll see this part or these parts, you will find it out that we have several folders and we have number of files available here. Okay, into this file, if you will see, these are the controller files, these are the controller files. Okay, let me first copy this. Just a minute. Over this now. So what exactly they are? These three are the controller files. Okay, and controller files into what? Into Kotlin. Vamsi, is it clear? While the UI part or the XML files, they are the layout files or XML files, you can say they are the UI part, UI files. Okay, these UI files are written into what? Into XML. Is it clear? Okay, and whenever we are going with some kind of activity, we have two different files. One is UI part, that comes under XML, into which we have to mention all the UI components whatever we need, while to control them within a separate things. So for that thing we have to use these Kotlin these controller files, which will available into Kotlin like this. Okay, here multiple folders also, I'll describe it later. Okay, now if you will look on these parts, if I explain this part, or if I open this part, you will find it out that this is what, this is the UI component what we have, and how exactly it look like. Okay, this is how it look like. So into this XML part, what exactly we designed? We designed a UI part, or you can say some kind of multiple components or some kind of visual components. We align them into a single part, into a single frame, so
so that we can develop a user interface where user can click, user can manage, user can do the things whatever we need, whatever they need. And to handle the responses, that what exactly he or she noted into this email, what exactly he or she noted into this password, and whenever he or she will click on this login button, what will happen. So this whole nature, this whole components, we are handling this component into this Kotlin file like this. Okay, Vamsi, is it clear that we are handling two different parts? One is XML and one is Kotlin. Okay, now what exactly we have to go with Kotlin, because from tomorrow we will going to learn about Kotlin. From tomorrow we are going to understand about the Kotlin files, that how exactly Kotlin works. ओम प्रकाश जी, सुशांत, कल से हम लोग Kotlin के ऊपर पढ़ने वाले हैं. ठीक है, आज बस मैं आपको एक बेसिक फ्रेम देके खत्म कर दूंगा. कल से हम लोग Kotlin के अंदर ये पढ़ेंगे Kotlin लैंग्वेज पे काम कैसे करते हैं. ठीक है, सुशांत क्लियर है? राजेश जी ठीक है? वामसी, फ्रॉम टुमारो वी विल गोइंग टू लर्न Kotlin. Okay, your journey will start from tomorrow exactly, that your journey will start from Kotlin part, and for respective parts whatever the concepts getting left, I'll provide it to you in are you free into the morning, Vamsi? Can you please pardon? After 8:30 a.m. you will free. Okay, so we'll decide our time for 2 to 3 days for these things. Okay, I need 1 or 2 days for of yours for to explain these things only. Okay, so now for that thing, सबसे पहले तो आज आप लोग, मैं इसको और ज़्यादा